welcome. You're watching Morning Markets on Money9. I'm Sakshi, Batra, and this is where we get you all the key updates you need to begin your trading day right. Now, yesterday's trading session was quite an unusual one. We did see a technical glitch lead to a halt in trading on the National Stock Exchange, and this exchange was halted for 4 hours beginning 11:40 a.m. Now, remember, what was crucial was that today is the FNO expiry day, and most of the traders were actually waiting to square off positions for the rollovers and unwinding of their positions right before the FNO expiry as well. Now, there was no communication for a long time from the NSE as well as to whether the session will resume for trading, within the trading hours or after that as well. So the anxiety levels kept going up, and it actually led to a whole lot of strict positions by several broking houses towards the close of the 3:30 p.m. mark as well, to force close most of the positions that were left open and to cancel some of the orders that could not get executed as well. Now, that really led to a whole lot of anxiety among the traders as well. But we did see that both the exchanges, Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange, reopen or resume for trading after 3:30 as well. There was a pre-open, and from 3:45 p.m. until 5 p.m. we saw an extended trade of 90 minutes as well. Now, this was something that was definitely unusual. And again, another thing happened that with a tweet from the finance minister talking about lifting the embargo for the business transactions of government projects with the private banking space, that actually led the private banks also soaring in trade as well. And towards the close of this extended session, we actually saw the markets end quite a bit in the green, 2% gains for both the benchmark indices, the Sensex and the Nifty as well. We reclaimed the mark on 50,000 on the Sensex. 50,781 was the closing level, 2.07% of a jump over there. The Nifty 50 also, if you see, 14,982 was the level at which the Nifty closed, with gains of about 274 points, 1.86% of gains over there. Now, Nifty Bank you need to watch out for, closer to 4% gains, and that was led by this statement from the finance ministry as well. And it was actually a tweet that led to a whole lot of soaring on the banking space, especially the private banks really led the show in that last one and a half hours of trade from 3:45 to 5 p.m. and that's what we really saw. But most of the experts, market experts, and most of the broking community have been talking about that, and they have been criticizing the National Stock Exchange for the lack of communication, because it was a crucial time. Although there was a technical glitch and the exchange was really working on the kind of solutions that they could get out of that technical glitch that erupted from the telecom services, and both the servers actually were not working at that point in time. Several questions were being raised as to whether the expiry could have been shifted or not, or whether there could have been an early communication from the exchange that no matter what, whenever the exchange is back up again, we will give you enough time to square off your positions. So there could have been some calming of the nerves on that front, but I'm sure the exchange will definitely come out with a statement on that as well, as to what were they doing and what prevented them to come out with a clarity in the statements as well, and that too before the trading hours and before the trading hours as well. So we'll just have to wait and watch out for as to how these things will progress, and hope that such things do not happen again in future too. The broader markets indices also performed well, 1.5% gain for the small cap. Also, the mid cap index rose by 0.8% at close with 153 points of a gain over there. Moving on to the sectoral indices as well. First let's actually check, what are the cues that we are getting from across the world. Now, remember, overnight cues have been quite positive. In the world view, the US markets have actually, throughout the trading session, they were trading with massive losses, but a whole lot of reversal was seen in all of these exchanges. To talk about the Dow Jones, that actually eked out record highs towards the close as well, 1.35% uptake, a 424 point of a gain, and it shut shop at 31,961.
And remember, it erased a whole lot of losses overnight as well. Both the S&P 500 and Nasdaq indices also ended up with over 1% gains as well. And those also, most of the technology-led stocks also saw a whole lot of recovery on the Nasdaq too. It ended at 13,597 as well. So the US Qs were quite positive. The Dow record high as well as the reversing of the losses. And they almost ended up at the high point of the day for sure. Financials were at a all-time high for sure for the US markets too. Moving on to the Asian market cues as well. Now you can see again they are also taking out all the positive cues from the US markets, and they're all up right now. 1.5% gains for Nikkei 225, 1.87% rise for the Hang Seng Index, and the Shanghai is also up by close to 1% in trade as well. So encouraging news on the vaccines front. The comments from the Federal Reserve Chairman Jerome Powell, all of them were taken in quite positively. Now remember that the SGX Nifty has also taken in the adjusting factor from the extended trade that India had, and it is actually showing an uptick, 1.5% uptick for the domestic indices for the Nifty in today's trading session, over 15,000 kind of an open. So we can actually hope for a gap up opening in today's trading session. But because it is the F&O expiry day, we'll just have to see whether the gains will be, carried on towards the close of the session, or will there be heightened volatility and some bit of profit taking on this on the index in today's trading session. Now, when you talk about the money markets, you can actually see that the rupee has been trading slightly up, 72.32 against the dollar, 0.19% of an appreciation over there as well. So we'll just have to see how this space also pans out. But when we also talk about the crude market, remember that they are back again at the 13-month highs after the US data has showed a drop in the crude oil demand. So you can actually see the Brent crude climbing up over $67.35 to the barrel. So that's the highest level that we've seen in the last 13 months for sure. 0.5% gain for the Brent crude, and WTI NYMEX crude also was up by 0.35% as well. Now moving on to the stocks that you need to keep on your mind. Dredging Corporation of India, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करीब 13% तक का मूव हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा था. अब कंपनी ने एक MOU साइन किया है कोचिन शिपयार्ड के साथ, जिससे कि वो एक कंस्ट्रक्ट करेगा फर्स्ट एवर ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर इन इंडिया. तो ये एक इंपॉर्टेंट काउंटर होगा वॉच आउट करने के लिए. ऑलरेडी कल के ट्रेडिंग सेशन में काफी शार्प जंप दिखा और ये कंटिन्यू रह सकता है क्योंकि न्यूज पॉजिटिव है आज के ट्रेडिंग सेशन में भी. आगे बढ़े तो देखते हैं अगला स्टॉक कौन सा है. HG इंफ्रा इंजीनियरिंग, यहां पर भी आपको नजर रखनी है. 2.5% तक की मजबूती कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी और कंपनी को डिक्लेयर किया गया है L1 बिडर NTPC द्वारा, जिससे कि वो जो एक कंस्ट्रक्शन है रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए उसे L1 बिडर चुना गया है और डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज है HG इंफ्रा इंजीनियरिंग के लिए. एक्सटेंशन ऑफ द रैली फ्रॉम यस्टरडेज ट्रेड कैन डेफिनेटली बी एक्सपेक्टेड इन टुडेज ट्रेडिंग सेशन. अगला स्टॉक देखते हैं कि कहां पर आपको नजर रखनी है और ये भी रियल एस्टेट स्पेस से ही जुड़ा हुआ काउंटर है. इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर नजर रखिए. कल 0.5% तक के गेन्स यहां पर थे. CCI ने अप्रूव किया है मर्जर ऑफ नाम एस्टेट्स एंड एम्बेसी वन विद द कंपनी. तो ये जो मर्जर होगा इसके नुआंसेस क्या होंगे इसके ऊपर डेफिनेटली नजर रखनी होगी. लेकिन ये जो खबर आई है इसका देखना होगा कि किस तरीके से आज स्टॉक प्राइसेस पे असर देखने को मिलता है. आगे बढ़ते हैं और अगला स्टॉक देखते हैं और ये भी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स की तरफ से जो इंफ्रा स्पेस है उसमें बाजार रह सकता है क्योंकि होली ओन सब्सिडरी जो है कंपनी की उसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है कंसेशन पीरियड ऑफ थाने गोडबंदर BOT प्रोजेक्ट February 23 को. तो कुछ यहाँ पर आप इंडिकेशंस पॉजिटिव इस काउंटर के लिए भी देख सकते हैं. और आगे बढ़े तो इंडोरामा सिंथेटिक्स, यहाँ पर आप नजर रखिए. 4.5% तक का अपमूव हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखा. कंपनी ने अप्रूव किया एक्सपेंशन प्लान 640 करोड़ रुपए का कंपनी के लिए और उसकी होली ओन सब्सिडरी के लिए. तो कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस और टिक्स यहां पर भी देखने को मिल सकते हैं. आगे बढ़े तो मारुति सुजुकी के काउंटर पर आप जरूर ध्यान रखिए क्योंकि इसमें काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है. खासतौर पर पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन काफ़ी फोकस करने वाली है इंडिया मार्केट स्टोरी पर और मारुति के लिए भी काफ़ी अग्रेसिव टारगेट्स रखे हैं. भले ही वो मार्केट शेयर मेंटेन करने की बात हो, जहां पर 50% से ऊपर का जो मार्केट शेयर है उसे मेंटेन करने के लिए टारगेट्स रखे गए हैं पैसेंजर कार सेगमेंट में. और साथ ही मारुति सुजुकी को यह भी बोला गया है कि काफ़ी ज़्यादा और प्रमोशन किया जाए इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर. अग्रेसिव टारगेट्स यहाँ के लिए भी मेंटेन किए हैं. CNG इन सभी पॉकेट्स को काफ़ी फोकस करने के लिए मारुति को कहा गया है. और ग्लोबली भी जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मारुति सुजुकी के लिए करती है उससे भी कई ज़्यादा अग्रेसिव टारगेट्स कंपनी के लिए दिए गए हैं. तो पॉजिटिव टिक्स आपको इस काउंटर पर भी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं.
आगे बढ़ते हैं और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक और काउंटर है जहां पर आप नजर रख सकते हैं। यहां पर कंपनी को IRDAI से अप्रूवल मिल चुका है स्टेक परचेज के लिए बाय एक्सिस एंटिटीज, और रेगुलेटर ने ये अप्रूवल जो दिया है ये एक्विजिशन के लिए है 12% तक के स्टेक के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो कि एक्सिस बैंक का है, और साथ ही साथ उसकी सब्सिडरीज एक्सिस कैपिटल के द्वारा भी। तो इन सभी पर भी आपको नजर रखनी होगी। आधे प्रतिशत तक के आसपास की तेजी और आगे जाते हुए यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिल सकती है आज के ट्रेडिंग सेशन में। आगे बढ़े तो MEP इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, ये एक और स्टॉक है जहां पर आप नजर रख सकते हैं। अगेन कंपनी को लेटर ऑफ अवार्ड मिला है NHAI की तरफ से, और एक टेंडर के द्वारा जो उड़ीसा में स्टेट ऑफ उड़ीसा के लिए यहाँ पर बातचीत हो रही है, एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए ये कंपनी को लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। तो डेफिनेटली ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। 16 रुपए के आसपास ये काउंटर है, और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने 2% तक की बढ़त देखी थी। आज भी यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। तो ज़्यादा जो स्टॉक्स हैं वो इंफ्रा स्पेस और रियल्टी स्पेस से हैं, ऑटो स्पेस और अब पिरामिड इंटरप्राइजेस पर भी आप नज़र रखिए, क्योंकि जो कंपनी की सब्सिडरी है पिरामिड फार्मा, इसने कंप्लीट किया एक्विजिशन कन्वर्जेंस केमिकल्स के साथ। तो कुछ एक सेंटिमेंटल इंप्रूवमेंट आपको इस काउंटर पर भी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। तो इन सभी खबरों पर आप नज़र रखिए, और IPO स्पेस यानी कि प्राइमरी मार्केट स्पेस में भी आपको नज़र रखनी होगी, क्योंकि हिरनबाई इंडस्ट्रीज का जो इशू है ये सब्सक्राइब हो चुका है ऑलरेडी कल तक 2.74 टाइम्स, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी पहले 2 दिनों में देखने को मिल चुका है। आज आखिरी दिन है इस IPO के सब्सक्राइब करने के लिए, और आज ये IPO बंद होने वाला है। तो देखना होगा कि आज किस तरीके का रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के लिए स्टॉक रिकमेंडेशंस कौन से आए हैं। तो आज की ट्रेडिंग डे शुरुआत होने से पहले ही आपको 5 कॉल्स मिल जाएंगी जहां पर आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस ले सकते हैं। रुचित जैन की तरफ से सबसे पहले सिटी यूनियन बैंक पर आप नजर रखिए, 2.5% तक की मजबूती कल के सेशन में दिखी। 160 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट प्राइस आप रखिए 175 रुपीज का। आगे बढ़ें तो APL अपोलो ट्यूब्स, यहां पर आज 4% तक की बढ़त हमें कल के सेशन में दिखी थी, और तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। रुचित का मानना है स्टॉप लॉस लगाइए 981 का, और टारगेट प्राइस रखिए 1080 का ऊपर में। और आगे बढ़ें तो अगला जो स्टॉक आया है वो है मजर मोहम्मद की तरफ से। JK टायर एंड इंडस्ट्रीज पर वो खरीदारी करने के लिए कह रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 2-2.5% तक की मजबूती यहाँ पर कल के सेशन में दिखी थी। स्टॉप लॉस लगाइए 119 का, और टारगेट प्राइस आपको यहाँ पर रखना है 140 रुपए का ऊपर में। 127 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। मजर का मानना है ऑटो एंसिलरी स्पेस से, बैटरी स्पेस से खास तौर पर आप एक्साइड इंडस्ट्रीज पर नजर रख सकते हैं। 2% तक की बढ़त कल दिखी। स्टॉप लॉस लगाइए 199 का, और टारगेट प्राइस यहां पर 219 का ऊपर में आप रख सकते हैं। 203 रुपए के आसपास की कल की क्लोजिंग थी। तो यहां पर अभी भी अगर आप देखेंगे 15 से 20 रुपए तक का अपटिक देखने को मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, या फिर आने वाले 1-2 सेशंस में। और अगर हम देखें तो अशोक लेलैंड ऑटो स्पेस से एक और काउंटर है जहां पर मजर काफी पॉजिटिव नजर आते हैं। कल के सेशन में 1% तक की बढ़त, यहां पर आप टारगेट रखिए 140 रुपए का। 127 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा था कल, और स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 119 रुपए का यहां पर भी। तो 5 कॉल्स आपके पास आ चुकी हैं आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए। उम्मीद करते हैं आज का जो ट्रेडिंग सेशन जाए काफी स्मूथ जाए, और आपको भी खरीदारी करने के लिए काफी मौके मिले। इस FNO एक्सपायरी के दिन हमें ये जरूर देखना होगा कि वॉलेटिलिटी का कितना इंपैक्ट पड़ता है, और जो कल की तेजी है क्या वो एक्सटेंडेड रहती है, या फिर यहां पर कुछ अड़चनें देखने को मिलेंगी। लेकिन लगातार मार्केट का कवरेज जारी रहेगा Money9 पर, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।